Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are going to talk about DILR set. So we have already completed the topic of arrangement, and today we are going to be focusing on numbers based sets. So what kind of sets we have seen, or what kind of sets we can expect, that we are going to discuss in today's session, and so on. Okay, so basically test series for NBA 2026 is already live, and so basically it's high time to enroll because we last year we were closest to the cat. Now let's start this one. So this is the first set we are picking. So now what does it say? So it says that for admission in various affiliated colleges, a university conducts a written test with four different sections. Okay, so there are four sections: section 1, section A, section B, section C, section D, that is given in the table. Okay, so this is what we got. Now, what else? Now it says, and the maximum marks that are given are 50. Okay. So college one section A cutoff is 42. That is what that is given to us. Okay. And the following table gives us aggregate as well as overall sectional cutoff. ठीक है, so aggregate भी है अपने पास, वो भी है, sectional cutoff भी है section wise. ठीक है, and student will get the admission only if he or she gets marks greater than or equal to cutoff marks in each of these sections, and her aggregate marks are at least equal to aggregate cutoff marks specified by the college. Okay. Now the problem is, people might think in this set, this is the tricky part. People might think that 42, 42, 42, this is 126. So यहाँ पे 50 marks होने चाहिए section cutoff, right? So that summation becomes 176. But that is not right. And why not? When something is missing in the table, it means it doesn't have any sectional cutoff. And why I am telling you this? क्योंकि पूरे के पूरा जो information है, if you are going to read from here to here, if you are going to read the complete information, it nowhere says that if the table is missing some values. It's not missing values. If nothing is written here, it means there is no cutoff. सेक्शन डी का कटऑफ उन्होंने लगाया ही नहीं. सेक्शन ए का कटऑफ है, कॉलेज वन में सेक्शन ए का कटऑफ है, सेक्शन बी का कटऑफ है, सेक्शन सी का कटऑफ है, सेक्शन डी का कोई कटऑफ नहीं है. सो कॉलेज अगर किसी का सेक्शन ए में 50 मार्क्स आए, so someone gets 50 marks in section A, same person gets 50 marks in section B, 50 marks in section C, and gets 26 marks in section D. So overall score is going to be 176, and that person is definitely going to get a call from college A. This is what I'm sure of. Okay. So this is what is happening in this. Okay. So now what we are going to do. Hello Aprajito. क्या अपराजितो, क्या फनी हो गया? So today we have done a little difficult sets as compared to the previous classes. That's it. So anyhow, let's continue with this. So basically this is, so did you, okay. So basically what is happening, that if I'm talking about this one, so we'll talk about that, Rajito, we'll talk about that later. So basically, did you get the, did you understand the information that is there? कि यहाँ पे जो the missing values are actually not missing values. If section is not having it's the, if the value is blank, it means there is no sectional cutoff. और यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते because there is no information that is given. And if I am going to look at the question, every question is an independent question. Bhama get calls from all the colleges. What can be minimum aggregate of marks obtained by him? Charlie got calls from 2 colleges. What could be the minimum marks obtained by him in a section? Aditya did not get called from even from a single college. What could be a maximum aggregate cutoff of obtained by him? So Bhama is getting called from every college. So if Bhama is getting called from every college, it means in section A, Bhama needs to get at least 45 marks जिससे उसके सारे कट ऑफ निकल जाए. If I am going to look for section B, again उसका 45 marks so that उसके सारे sectional कट ऑफ निकल जाए.
यहाँ पे सेक्शन सी में भामा के 46 होने चाहिए सो दैट ऑल द सेक्शनल कट ऑफ्स आर क्लियर। सेक्शन डी में भामा मस्ट गेट 45 मार्क्स सो दैट ऑल द सेक्शनल कट ऑफ्स आर क्लियर। ठीक। So what is the total summation that we are looking for? That is 181. Now we need to check at 181, are all the aggregate cutoffs clear? Yes. 176 is clear, 175 is clear, 171 is clear, 178 is clear, 180 is clear. So basically अगर भामा के सेक्शन ए में 45 आएंगे तो ये इसका कट ऑफ क्लियर हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बाकी के तो है नहीं। इफ आई लुक फॉर 45 मार्क्स इन सेक्शन बी तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। If I look for 46 marks, तो सारे clear हो। So this is how this question should be approached. So what should be the answer of this question? That is going to be 181. ठीक। Now if I am going to look for the second question, Charlie got calls from two colleges. What could be the minimum marks obtained by him in a section? ठीक है। चार्ली की जो कॉल आ रही है वो दो ही कॉलेज से आ रही है, तो उसको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए? ठीक। So in this particular question, I am going to pick up the colleges with the two lowest aggregate cutoff. So दो lowest aggregate cutoff कौन से हैं? 171, 175। ठीक। तो इस सेक्शन में 45 तो चाहिए चाहिए। सो मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन बी में 50 नंबर आ गए, सेक्शन सी में भी 50 नंबर आ गए, सेक्शन ए में 50 नंबर आ गए, सेक्शन डी में 25 आ गए, या फिर ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 25। Now what is the total score? That is 175. So 175 के स्कोर पे कॉलेज 2 इज क्लियर, कॉलेज 3 इज आल्सो क्लियर। तो इसका मतलब मिनिमम स्कोर कितना चाहिए कॉलेज 2 कॉलेज 3 क्लियर करने के लिए? 25 मार्क्स। उसके ऊपर आएगा तो शायद दो से ज्यादा कॉलेज कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब व्हाट इज द मिनिमम स्कोर someone can score to clear two exams? That is going to be option 3. Now let's look for the next one. Aditya did not get a call from even a single college. आदित्य की कहीं से कॉल ही नहीं आई। Now question is asking me to maximize. आदित्य की कहीं से कॉल नहीं आई और मुझे मैक्सिमाइज करना है आदित्य का स्कोर। ठीक है। So here what I am going to do, I am going to pick up two scenarios जहां पे सप्लीमेंट्री सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब अगर मैं कॉलेज 2 उठा लूं और कॉलेज 4 उठा लूं, ये दो उठा लूं, तो इससे मेरे चारों कॉलेजेस कवर हो जाएंगे। हाँ या ना? क्या और कहीं कुछ सप्लीमेंट्री बन रहा है? यहाँ भी हो सकता है कॉलेज 5, ये हो सकता है, यहाँ मैं इसको भी उठा सकता हूँ। ठीक है। सो अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें शायद, हाँ ठीक है, आदित्य की कॉल नहीं आई कहीं से भी और स्कोर मैक्सिमाइज करना है। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से कि सेक्शन ए में आदित्य इज गेटिंग 41 मार्क्स, तो कॉलेज 1 चला गया, कॉलेज 4 चला गया, कॉलेज 5 चला गया। अब इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है। सो सेक्शन वाइज इफ आई एम गोइंग टू लुक एट कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, आई एम गोइंग टू से section wise I am going to look at complementary things. One is going to be section C and section D. Section C has cut off in college 1, college 2, college 3, college 4, college 5, and section D has cut off in college 4 and college 6. तो अगर मैं 41 मार्क्स इसको दे दूं यहाँ पे, तो कॉलेज 1 चला गया, कॉलेज 2 चला गया, कॉलेज 3 चला गया एंड कॉलेज 5 चला गया। और यहाँ पे 43 मार्क्स दे दूं तो ये कॉलेज भी चला गया, ये कॉलेज भी चला गया, उसकी कॉल कहीं से नहीं आ रही। अब यहाँ पे अगर मैं उसको 50 मार्क्स दे दूं और यहाँ पे भी उसको 50 मार्क्स दे दूं, तो कॉल तो उसकी तब भी नहीं आनी। सो even this is the marking scheme that the person is getting, still then that person is unable to going to get any calls. So that's the reason Aditya can get a score of 184, even then Aditya cannot secure any single call. I hope it is clear. Yes, no? ठीक।
So basically we got 181, we got 25, we got 184, everything right. ठीक है. Set 2 समझते हैं. Now, what does set 2 says? A company administers a written test comprising 3 sections. DI, written English, general awareness. ठीक है. तो 3 टेस्ट हैं 20 नंबर के. एक सेक्शन है दैट इज DI, सेकेंड सेक्शन इज written English. So I got 20 marks, 20 marks, 20 marks. So DI, written English, GA. So that is going to be 20, 20, 20. Recruitment है. A composite score of 80, तीनों का सम तो अपना क्या हो रहा है, that is going to be 60. लेकिन the question is saying the composite score is going to be calculated after 80. इसका मतलब out of 80 का मतलब कहीं कुछ तो additional कुछ होगा. Is calculated by doubling the marks in DI. So DI के जो marks given है उसको हमें 40 में convert करना है and adding it to the sum of the marks in other two sections. इसका मतलब WE को भी WE as it is लेना है और GA भी as it is लेना है and sum will become 20, sum will become 80. So that is the composite score कि इसके marks को double कर दिया, इस बाकी दोनों के as it is ले लिए. Now that is the total score we are looking for, that is the composite score we are looking for. ठीक है. अब यहाँ पे ये कह रहा है candidate who score less than 70% in 2 or more sections are disqualified. So 20 का 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 20 मार्क्स का 70% कितना होगा, 14 मार्क्स. अगर 2 सेक्शन में 14 से कम है या 2 है या 2 से ज्यादा में 14 से कम है तो इसका मतलब जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड हो गया. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट उसके बाद हमने टोटल निकाला कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जो लोग एलिजिबल होंगे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 14 के ऊपर होगा, 14 के ऊपर होगा, 14 के ऊपर होगा. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन among the rest, the people who are not disqualified, जो कंपोजिट स्कोर निकाला उसमें से 4 लोग जिनका हाईएस्ट है वो रिक्रूट किए गए. अगर 4 से कम क्वालिफाई कर रहे हैं तो जो क्वालिफाई कर रहे हैं सारे रिक्रूट हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट दिस इंफॉर्मेशन इज टेलिंग मी. ठीक है. मतलब बेसिकली उनका टारगेट है 4 लोग को लेना, लेकिन अगर 4 से कम क्वालिफाई करेंगे तो 4 ही लोग. ठीक है. 10 there are total 10 candidates who are appearing for the test. marks जो है वो टेबल में दिए हुए हैं, टेबल यहाँ पे है. ठीक है. some marks in the table, कुछ है कुछ नहीं है, that is what that is given. उसके अलावा अपन को आगे information given. ठीक है. So basically what information I am talking about, let me change it a little bit. Just let me make some changes over here. Just give me a moment. ये सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव. अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, नो कैंडिडेट्स हैव सेम कंपोजिट स्कोर. मतलब सबका कंपोजिट स्कोर अलग है. अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन WE. So in WE, Ajay got the highest scorer and unique highest means अजय से ज्यादा स्कोर किसी का भी नहीं है. ठीक है. Now the maximum marks are 20. So I might think the Ajay is getting 20 marks, but the thing is unique highest means this is 16 marks, this is 18 marks. So Ajay का स्कोर तो 19 भी हो सकता है. Ajay can score either 19 or 20. But what is it? I don't know. It can be 19, it can be 20. Both the values are possible. Anyhow. Among the 4 people recruited, so now this time I know कि ये वाली जो लाइन है, if 4 or less people are recruited, those who qualify, so 4 or less candidates qualify, all those who qualify are recruited. ये लाइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लोग रिक्रूट हो गए. ठीक है. एंड among the 4 people recruited, गीता का जो कंपोजिट स्कोर है that's lowest. ठीक है. इसका मतलब गीता is recruited. This is what I know. Now I have already figured out one point कि किसी का अगर 2 सेक्शन में 14 से कम है then that person is out. ठीक है.
So Bala is out, definitely not being recruited. Chetna is out, definitely not being recruited. Easter may be recruited, may not be recruited, but Easter is qualifying. Falak is not recruited, definitely disqualified, because in two sections, Falak is getting less than 14. Uh, Geeta is definitely qualified, and there is some other information. Okay. Ajay might be recruited, might not be recruited. So, लेकिन whatever where I am putting the ticks, it means those person are definitely qualified. ठीक है. Jatin is also qualifying. जो भी qualifying means not recruited. So Jatin can be in top four, cannot be in top four. I don't know. Geeta is definitely. So till now we figured out four people, three people. Danish and Harni and Indu scored the same marks in GA. ठीक है. So Danish, Harni, Indu means this and this same marks in GA. तीनों के marks यहाँ पे same है. So let's call it X. It can be any number. Now Indu and Jatin both scored 100% in exactly one of the subjects. ठीक है. 100% इंदू का किसी एक सेक्शन में है, जतिन का भी एक सेक्शन में है. इट मींस जतिन इज डेफिनेटली गेटिंग अ स्कोर ऑफ 20 in DI. So now what I am going to do, I am going to calculate the scores of everyone. Calculate composite score. Composite score कैसे? DI के स्कोर को डबल करो, बाकी दोनों एज इट इज ऐड कर दो. So 19 2 38, 38 plus 12 is going to be 50, 50 plus 4 is 54. ठीक है. इसका स्कोर आ गया. नाउ व्हाट इज ईस्टर्स स्कोर? दैट इज गोइंग टू बी 24. 24 plus 16 is going to be 40. 40 plus 18 is going to be 58. ठीक है. If I am going to look for okay, Jatin is going to be 22 is 40. 40 plus 30 is going to be 70. So Jatin का स्कोर आ गया. ठीक है. Now basically Indu and Jatin both scored 100% exactly in one section, and Jatin's composite score is 10 more than Indu's. इसका मतलब Indu का जो composite score है that should be 60. ठीक है. Now I know Indu is scoring 20 in one section. कौन से section में? So if I assume Indu is assuming getting 20 marks in DI. ठीक है. So अगर DI में 20 है, so 22 is 40. 40 plus 8 48. तो यहाँ पे 12 marks होंगे. Now in two sections, Indu is scoring less than 14 marks. Now Indu should be disqualified. इसका जो मतलब हम डिड्यूस करेंगे, इसका मतलब ये है कि लेकिन इंदू को तो क्वालिफाई होना है. इंदू वाज रिक्रूटेड, सो इट मींस इंदू इज स्कोरिंग 20 मार्क्स इन जीए. सो 20 plus 8 28, 28 सो बचा 32. सो यहाँ पे उसके मार्क्स होने चाहिए 16. 16 2 are 32. 32 plus 8 is 40. 40 plus 20 is 60. So this should be 20, and this should also be 20. Now रिक्रूटमेंट के लिए कौन है? ये तो हो ही सकता है, मतलब क्वालिफाई हो रहा है. होगा या नहीं होगा नहीं पता. So 8 2 are 16. 16 plus 15 is going to be 16 plus 15 is going to be 31. So Danish's score is going to be 51. ये पता है हमको. Falak's score is going to be 30. 30 plus 7 37. 37. This is going to be 47. Now important point is Geeta is being recruited. ठीक है. So ये जतिन तो डेफिनेटली रिक्रूट हो रहा है, इंदू डेफिनेटली रिक्रूट हो रही है. ठीक है. ईस्टर मोरलेस रिक्रूट हो सकता है. ठीक है. नाउ गीता के स्कोर की बात करते हैं. गीता इज गेटिंग व्हाट? 14. 14 2 are 28. 28 plus 6. So till now whom I have got so far, one is Jatin, one is Indu. और गीता पे देखते हैं. So basically Geeta needs to get a score that's more than 51 to be the fourth person. So 14 2 are 28. 28 plus 6 34. So Geeta का यहाँ पे स्कोर या तो 19 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 28 plus 6 34. सो 51 से ज्यादा बनाने के लिए या तो ये 18 होना चाहिए, या ये 19 होना चाहिए, या ये 20 होना चाहिए. तब इसका स्कोर या तो 52 होगा, या 53 होगा, या 54 होगा. ठीक है. तब कहीं जाके गीता क्वालिफाई होगी. ठीक है.
18 हो नहीं सकता बिकॉज 18 इज ईस्टर्स स्कोर। ठीक है, सो 18 नहीं होगा, 18 इज ईस्टर्स स्कोर। हैवी। ओके, सो बेसिकली अगर मैं गीता की बात करूं, सो गीता का स्कोर 18 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता गीता? बिकॉज स्कोर्स कैन बी सेम। ठीक, 18 हो सकता है, 19 भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अजय की बात करूँ, सो बेसिकली गीता का और इसका स्कोर क्या क्या हो सकता है? हरनीज स्कोर, आई हैव नो आइडिया अबाउट हरनीज स्कोर एनी। सो गीता का स्कोर, इट कैन बी 52, इट कैन बी 53, इट कैन बी 54 टू बी क्वालिफाइड एज अ फोर्थ पर्सन। दिस इज व्हाट वी गॉट। ठीक है। नाउ 20 is not possible, and why not? Because Ajay is getting a score of 20। ठीक है, सो अजय का 19 या 20 होगा। सो खैर गीता के स्कोर भी अभी देख लेते हैं। गीता कैन गेट आइदर 18 और 19, मतलब स्कोर जो 52 होगा, 53 होगा, जो भी होगा अभी समझते हैं। नाउ बेसिकली इफ आई कैलकुलेट अजय स्कोर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 8, 8 2 just 16, 16, 16, 32, 32 plus 19 is 51। Now everyone has distinct composite score, मतलब अजय का स्कोर 19 नहीं हो सकता, इसका मतलब अजय का स्कोर 20 ही होगा। So this is what I am getting. Ajay's score is 22 and Ajay's composite score is definitely going to be what? Ajay's composite score is definitely going to be 20. So this is going to be 20 and the composite score is going to be 52. And if Geeta needs to be qualified, it means Geeta needs to score more than 52. It means what is a possible score for Geeta? That should be 53. And in 50, to get a composite score of 53, Geeta needs to score a score of 90 in WE. ठीक है, तो यहाँ पे 19 आ गया। सो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन दैट वी कुड हैव डन सो फार, और जो भी है उस हिसाब से हमें करना है। एंड हु ऑल आर गेटिंग क्वालिफाइड? वन इज जतिन, दैट इज रैंक 1, सेकंड वन इज इंदू, दैट इज रैंक 2, थर्ड वन इज ईस्टर, दैट इज रैंक 3, एंड फोर्थ वन इज गीता, दैट इज रैंक 4। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। नाउ इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, जतिन का कंपोजिट स्कोर दानिश से ज्यादा है, जतिन का सबसे ही ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इंदू स्कोर्ड लेस देन चेतना एंड डीआई, इंदू स्कोर्ड लेस देन चेतना एंड डीआई, इंदू का स्कोर चेतना से डीआई में कम है, इंदू का स्कोर चेतना से डीआई में कम है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड थर्ड वन इज जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदू इन जीए, and third statement is false। इसका मतलब first statement is true, second statement is true, third statement is false। So answer of this question is going to be option 3, that is both 1 and 2। Now which of the following statement must be false? Bala scored same as Jatin in DI। बाला का जतिन, बाला और जतिन का स्कोर सेम है डीआई में, मस्ट बी फॉल्स। अब मस्ट बी फॉल्स का मतलब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। लेट्स से बाला इज हैविंग 20, so 22 is 40, 40 plus 11 plus 9, बाला का स्कोर 60 हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंदू हैज अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 60। सो बाला का स्कोर जतिन के बराबर डीआई में नहीं हो सकता। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट वन, if all the candidates except Ajay and Danish had have different marks in DI। अब यहाँ पे ये बोला है कि अजय और दानिश को छोड़ के सबके मार्क्स अलग, अजय और दानिश को छोड़ के सबके मार्क्स अलग हैं। एंड बाला's composite score was less than Chetna's composite score, then what is the maximum marks Bala can score in DI? ठीक है, सो बाला का जो कंपोजिट स्कोर है वो चेतना के कंपोजिट स्कोर से कम है। ठीक है, सो चेतना का कंपोजिट स्कोर कितना है यहाँ पे? दैट इज गोइंग टू बी 54, बाला का कम। ठीक है, and Bala's score has to be maximum and every value should be different। So this is 20, this is 19, then Bala can have a score of 18। So 18 to the 36, 36 plus 20, 56।
So can Bala have a score of 56? No, because Chetna's score is 54. So Bala ka 18 nahi ho sakta. Now let's go for 17. If I go with 17, then Bala's score is going to be 54. Again, that's not possible. So basically, we can't have 18, we can't have 17, we can't have 16, 16 because it is here, we can't have 15. Can we have 14? No. So the only possible score that Bala can have is 13, and that is going to be the maximum possible value. But again, you need to check that whether it is clashing with any other number or not. So that is going to be 13 2s are 26 plus 20 is going to be 46. And no one has a score of 46 so far. It means this is a correct number. So what is the highest possible score for Bala in DI? That is 13. Now, next one, if all the candidates scored different marks in WE, then what is the maximum marks Harni could have scored in WE? सबका जो WE में marks अलग अलग है. So now this is 20, this is 19, this is 18, this is 16, this is 15. Now we are looking for Harni's marks. So the Harni can be either 17. So highest possible value can be 17 or it can be 14. 17 के बाद 14 होगा. 7 दोनों पे check कर लेते हैं. Now 5 2s are 10. 10 plus 20 is 30. 30 plus 17 is 47. Now this becomes, if it is 17, it becomes 47. And this is 47. It is clashing with Falak's score. So 17 is not a possible number. Now let's check with 14. So 5 2s are 10, 10 plus 20, 30, 30 plus 40 is 44. Is it clashing with any other number? No. So it means Harni's highest score that is possible is going to be 14 in WE. So answer of this question is going to be 14. Now let's check the answers. The solution is fine. We got the answers right. Now this is how it should be approached. Thank you.